अस्सलाम वालेकुम। वी विल बी doing two set of labs today. एक हमारी है जी एनर्जी मीटर पे, which is a single phase energy meter. This is the type of energy meter जो आपको अपनी labs में भी easily मिलेगा देखने को, right? So let's just discuss the theory part, which is basically the construction and working of your energy meter, and lab part would be covered after this, right? परफॉर्मेंस किस तरह होगी, किस तरह फंक्शन करता है, क्या प्रोसीजर है, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लैब. सो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल is the mechanism of rotation of the aluminum disc. This is actually your aluminum disc which rotates when the current flows through your energy meter. So yes, counting and display is also a mechanism, but it is linked with your disk rotation, right? So we won't be, yes, we will be discussing how we will be reading your energy meter. जो ये numbers होते हैं इसको हम किस तरह read करेंगे, but main concept is understanding the construction. So construction में हमारे पास if you just open it up, ठीक है, and आप इसका internal structure देखें तो this is some what you would be looking into. So there are a set of voltage coils, right? And ये specific construction is to produce a 90-degree lag, and then there are a set of current coils, and you can see the aluminum disc is rotating in between those current and voltage coils, right? फिर एक magnetic layer present है जो basically stop करता है current flow को, stop करता है disc को when we switch off the flow of current and supply, right? So we also call it watt hour meter or energy meter because uh, it is present हर घर के बाहर. अगर आप देखें तो there is a set of energy meter and वो आप वाले आके accordingly reading लेते हैं and then they assign your bills to you, right? So the mechanism lies on the concept of Faraday's law, right? In which EMF is induced, and then there is a counter EMF to stop the effect of that present EMF, right? So that Lenz's law and Faraday's law in combination जो है वो this theory of aluminum this rotation को create करता है. So let's just discuss this and we will go backward if we miss any point, right? So this is how आप अपनी supply connect करते हैं. Now you can see AC supply आ रही है and it is connected to your current coils, right? And it is similar जिस तरह आप connection करते हैं ammeter का, right, in your circuit. अगर आप कहीं से इस connection में fault कर देंगे then it will result in sparks and burning of your energy meter, right? So it's a series connection, then is your load, and then is your ground or the neutral line light, right? Okay. अच्छा अगर आप देखें तो this is the parallel combination. voltage coil को हमने completely parallel connect किया हुआ है to your load, which is similar to voltmeter connection, right? होता ये है in this entire procedure when current start to flow, इन दोनों coils की वजह से ये जो आपकी windings हैं magnetic field will be produced, right? इसी तरह ये coil magnetic field produce करेगी, but इसका जो orientation and design है it produce 90-degree lagging effect, right? अच्छा ये भी magnetic field produce करेगी, ये दोनों coils भी करेंगी, and we are basically placing a disc in this changing magnetic field, right? So disc is what? A metal or a conductor, right? So when a conductor is placed in changing magnetic field तो क्या होता है, EMF induce होती है in that specific conductor, but the direction of that EMF or the current जो flow होता है that is basically eddy current, right? उसकी direction of that current is such that कि आपका जो EMF generate हो आपका जो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो वो अपोज करे द कास्ट प्रोड्यूसिंग इट, राइट? सो यहाँ पे इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है बिटवीन द एडी करंट्स एंड जो आपका मेन करंट है, राइट? एंड उन दोनों की
जो interaction है उसकी वजह से there is a torque induced in this aluminum disc and it starts to rotate, right? And when you cut off your supplies, these are the set of magnetic brakes जो simply stop कर देती हैं aluminum foil के flow को at that immediate point, right? These are the set of points, right, जो यहाँ पे भी डिस्कस किए गए हैं कि there is a set of series and shunt coils. This is your shunt coil, ये आपकी series set of coils हैं and इनकी मदद से they produce rotating magnetic field which is cut by your rotating disc, right, which induces EMF in the disc, right? अच्छा जी, इस EMF की वजह से there is a self magnetic flux produced, right, which is the cause of AD current and ये oppose करता है the main cause producing it and the interaction of rotating current and AD current basically produce torque, right? अच्छा, जो two coils हैं as I said to you, एक आपकी series connection वाली coil है which produces flux proportional to your current and जो आपकी parallel coil connection coil है it produces flux proportional to your voltage and दोनों का interaction जो है finally आपकी power generate करता है, यहाँ पर power measurement का mechanism generate करता है जो कि basically इसके साथ आगे link होते हैं, ऊपर gears होते हैं. These are the gears which are connected to your dials, right? This is the set of your dial. इसके साथ वो gears connected होते हैं, so when your disc is rotating your dials are changing accordingly, right? अच्छा जी, so when you see connection, this is how वो आपका lineman जो है वो आपके houses में energy meter install करते हैं. So अच्छा, sometimes it's a flip, right? ये यहाँ से live and neutral की जगह ये यूं and यूं भी होता है. It depends on your type of meter, right? आप उसकी जो main either open it up and see कि आपके connection किस तरह जा रहे हैं, or you can see it with the help of a data sheet, right? So main supply, say there's a live wire and a neutral wire going into your meter and they are further going into your main plug. जो आपकी distribution board में main fuses लगे होते हैं, plugs लगे होते हैं, वहाँ पे connection जा रहा है, which is further connected to, you can see कि आपके हर room के जो fuses हैं distribution board में उनको live करी हुई है and each live is then with walls के internally जो आपकी wiring हुई होती है वो आपके switches पे जाती है, right? And similarly there is a ground option also available जो कि again आपके fuses से आ रहे हैं, जो आपके switches हैं उनसे आ रहे हैं and you connect them with your loads or bulbs, right? So this is how your wiring is inside your home. So when you're talking about your scale, ठीक है, जब आप अपने scale को देखेंगे, so it's 1/10, then it's 1, 10, 100,000 and 10,000, depend करता है आपका scale कितना है. This is how your watt hour meter is scaled, right? अच्छा, between 2 and 3 there are set of 10 lines, right? It means कि if you are reading this scale, it means कि आपकी kilowatt hour energy consumption is इस scale के लिए it's 0.001, right? 1 digit जब आपका इससे next line पे change होगा, right? जब पूरा 2 से 3 पे change होगा then it's a 0.1 energy consume, right? 0.1 kilowatt hour energy consume. Mostly आपकी lab इसी scale में lie करेगी, ठीक है? Because if you wait for this scale to change उसमें आपका बहुत ज़्यादा time consume होगा, so mostly इसी scale में हमारी lab cover होती है, right? So what else? This is the entire kind of theory detail behind your energy meter. Let's just discuss a few detail of the lab number 4, which is on your watt meter, right? Power factor calculation with the help of ammeter, wattmeter and voltmeter, right? अच्छा, this is how आपका वोल्ट मीटर जो डिज़ाइन किया हुआ था, अगेन इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पैटर्न है. एसी सप्लाई आपकी यहाँ पे कनेक्ट होगी, राइट? एंड आप उससे फर्दर आप आगे लेंगे कनेक्शन फॉर योर लोड. अच्छा, इसी के अक्रॉस आप अपना एमीटर जो है वो आपका, सपोज इफ देयर इज अ एसी सप्लाई है उसके साथ आप एमीटर, देन एमीटर की वायर यहाँ पे जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? ठीक है, इसी तरह
यहाँ से आपका बैकवर्ड्स जाएगा टूवर्ड योर ग्राउंड, राइट। एमिटर आपका बीच में कनेक्ट होगा, पॉजिटिव ऑफ AC सप्लाई टू एमिटर, देन नेगेटिव टू योर वॉट मीटर एंड दिस टूवर्ड्स योर ग्राउंड, ठीक है। इसके साथ आप लोड कनेक्ट कर देंगे एंड देन यस पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं टू measure the apparent V and I values, voltage and current values find करने के लिए, राइट। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर वोट मीटर एनर्जी मीटर, राइट। AC सोर्स आई, ठीक है, there is a coil, series coil, which is connected to road and back to your ground, right. Then you can see there is a parallel combination, ये आपकी deflection coil is basically connected to your जो shunt आपकी coil लगी है उसके साथ connection है इसका, ठीक है, and it is again grounded, it is totally parallel to your load, if you can see it, ये आपके load के parallel connect हुआ है, right, and these are in series. So again magnetic field due to current coils and magnetic field due to voltage coil और shunt coil, right, and इस इन दोनों की magnetic field का interaction आपकी needle deflection create करता है, जो कि आप observe करते हैं on your scales, right. अच्छा, जो आपका watt meter it's ranging from 0 to almost 1000, right. So अच्छा, what we will be doing in this lab, ये आपका present जो आपके watt meters हैं, right, मोर एक्यूरेट, मोर डिजिटल वर्जन ऑफ वॉट मीटर, ठीक है। इसमें आपको कॉस्ट एंड कंजम्पशन एवरीथिंग आप इसमें से हेल्प ऑफ दिस, अगेन इसमें भी जस्ट आपका प्लग लगेगा, जिस भी चीज़ की आप वोल्टेजेस कैलकुलेट करें, जस्ट कनेक्ट इट्स प्लग इन दैट प्रेजेंट वर्जन वॉट मीटर, ये आपकी लैब में अवेलेबल नहीं है, बट येस यू कैन सर्च देम ऑनलाइन, राइट। अच्छा, आपकी जो लैब है यू विल बी कैलकुलेटिंग वोल्टेज। अच्छा, इसका सिमुलेशन वर्जन सिमुलिंग वर्जन भी मैं आपको इसी लैब कर दिखा दूंगी, ठीक है, प्लस हार्डवेयर वर्जन भी। सो टेक रीडिंग्स विच एवर यू वांट टू एंड फीड देम एंड कैलकुलेट योर रीडिंग्स, राइट। पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग विल बी योर वोल्टेज, एमीटर की रीडिंग विल बी योर करंट, ठीक है। देन पावर बाय वॉट मीटर यहाँ पे आप नोट करेंगे एंड दैट स्पेसिफिक apparent wattage power divided by real power divided by your apparent power, which is V into I, will be your power factor. So these are the two sets of lab जो आप cover करेंगे, which is on your energy meter and watt meter and power calculation. Power calculation by 3 ammeter and 3 voltmeter method had been covered previously, right. This is totally with the help of simply a watt meter, right. So this is all for your lab number 3A, 3B and 4, right. So Allah Hafiz.